the next 30 minutes is going to be outcome-based education, or OBE for short, and how AI tools, yes, the same ChatGPT or other smart assistants you might use, can actually make our classrooms more purposeful, measurable, and fun. And by the end of the session, I hope we will walk away knowing three things: how OBE actually works. You've heard the acronym, now we will make sense of it. Second, how to write good measurable outcomes using Bloom's taxonomy. And third, how to use a few simple AI tools to design our outcomes, to design our rubrics and assessment. Sounds good? So let's begin with a very quick thought exercise. Okay. So let me reshare the screen. Just give me a moment. Okay. So I want everyone here to think about just one course or subject that you are currently teaching or studying. And in one line, just attempt to tell me, what do you want students to be able to do at the end of the course? Not what you want to teach, but what you want them to be able to do after you have taught the course. So let's hear a few. Anyone who would want to volunteer? Anything, in one line, what do we want our students to be able to do at the end of the course that we have taught? Anyone? You can raise your hands and maybe the host can unmute you. Anyone from the team? डॉक्टर नीरज, आप कुछ कहना चाहेंगे? Anything, any paper that you have taught? Dr. Rajshri? Anyway, I will take an example. For example, I am teaching the marketing paper. So I would want my students to understand marketing concept. Okay, that's a nice start. Very simple. For example, if somebody who's teaching statistics, then they would want their students to be able to apply statistical tool. Okay, somebody who is teaching a business communication or communication in general as AECC paper, they would want their students to be able to develop communication skills. Now, look at these words: understand, apply, develop. Now, each of these verbs actually carries a level of learning inside it. And that's the key to outcome-based education, because OBE starts not with what the teacher will teach, but with what the learner will be able to do. So let's make sense of how that is structured. So this is the famous OBE pyramid. Outcome-based education is basically a simple yet powerful idea. You start with the end in mind. So imagine an inverted pyramid, and at the top you have the program educational objectives, also known as PEOs. These describe what a graduate should be able to achieve 3 to 5 years after completing their program. So this is kind of a long-term plan. Next comes the program outcomes, or POs. These are the broader competencies students should demonstrate by the time they graduate. And finally, at the base, you have the course outcomes, or the COs. And these are the most specific measurable things a student can achieve by the end of a course or paper. Okay, so PEOs are the long-term goals. POs are skills and abilities, and the COs are the immediate measurable achievements. Let's take an example. Since I'm from the field of finance and commerce,
let's consider an example of economics. Okay. So a program educational objective might be that graduates demonstrate analytical and ethical decision making. A program outcome could be apply statistical and econometric tools to real world data. And a course outcome might be estimate and interpret regression models using R or Stata or other such statistical software. And you see how it moves from the big picture to the classroom level. And that is the alignment we are aiming for when we say we want to follow, we want to make our curriculum an OBE based curriculum. Now, the important challenge to make these outcomes measurable, we need one more tool, a vocabulary of verbs. And that is where Bloom's taxonomy comes into the scenario. So let's talk about one of the biggest challenges we face as educators. Now, how do we make our learning outcomes measurable? Now, often we write outcomes that sound nice. Students will understand marketing concept or students will learn about regression. But understand and learn, these are invisible verbs. They tell us nothing about what students can demonstrate. Now, how many of you have heard of Bloom's taxonomy before? Just a show of hands would do. How many of us have a brief acquaintance with the phrase Bloom's taxonomy? Just show of hand would suffice. We had workshops on Bloom's taxonomy, sir. Okay, okay. So there's a basic understanding to everyone. Okay, perfect. So, yeah, okay. So the concept is quite intuitive. Bloom's taxonomy gives us 6 levels of understanding. Just a minute, let me shift this slide. Yeah. So Bloom's taxonomy gives us 6 levels of learning from the simplest to the most complex form of thinking. And think of it as a ladder. And at the bottom, we start with remember, then we move to understand, apply, analyze, evaluate, and at the very top, create. So what does the understand word look like? Can we observe it? Can we measure it or grade it? That's why we turn to Bloom's taxonomy, which was developed by Benjamin Bloom in the 1950s, and it was later on revised in 2001. So it gives us a hierarchy of thinking skills from basic recall to complex creation and helps us choose verbs that show observable learning. So this is an example, a visual of pyramid or ladder with 6 cognitive levels. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Okay. So as we go up this pyramid, thinking about thinking becomes deeper and learning becomes transferable. For example, in a first year course, your course outcome might target apply. That is, use Excel to calculate descriptive statistics, for example, if you continue with the same statistics example. And in the final year course, we might target evaluate or create. Our students must be able to design a financial model to forecast revenue. So this vertical progression ensures that program outcomes are built systematically. And let me give you a quick example. First, remember, now students can recall or recognize facts. For example, list the steps of hypothesis testing. Understand. Now they can explain ideas. They can summarize the law of demand, for instance. In apply, they can use knowledge. For example, use linear regression to predict sales. In analyze, they can break down the information. For example, compare the elasticity of two markets. In evaluate, they must be able to justify the decisions. For example, assess whether this pricing strategy is ethical or not. In create, they can produce something new. For example, design a market entry plan for an organic brand. And as you go up the ladder, thinking gets deeper and learning becomes more transferable. So if you're teaching a foundation course, your course outcomes might focus on apply or analyze. And if it is an advanced or a project level course, then we will be aiming for evaluating or creating. Okay, let's do a quick check. So if I say design a marketing campaign for a local brand,
Which level is that? Now, design belongs to the create level. Okay. So see how just changing the verb changes the complexity of the task. And that is why in OBE, we say if you change the verb, you change the evidence. Now, here's the fun part. You can even use AI to help you find the right verbs and levels. Okay. So you can literally type it is all about giving the right kind of prompt, huh? And I'm sure that all of us must be already acquainted with chat gpt. So we can write a prompt such as suggest 5 measurable outcomes uh, for a course on business communication, each mapped to different Bloom's level, and AI will instantly give you all these different levels of Bloom's taxonomy, and you can just try it. Towards the end of the session, we are going to try and copy paste this prompt on the chat GPT. Okay. So just with a single prompt, you will have 6 measurable course outcomes in seconds. Okay. Another important concept when we talk about outcome-based education is rubrics. These are an important tool for us educators, for the teaching fraternity. So the question arises, designing rubrics for assessment. Now we know how to write outcomes. Let us figure out how to measure them. Because it's one thing to say that student will analyze data, student will be able to design a strategy, student will be able to assess the plan. But how do we know whether they actually did? And the answer lies in rubric. Now, what is a rubric? A rubric is a scoring guide that describes level of performance for a task or a skill. And it's more than just a marking scheme. Okay, it defines what quality looks like. And it has 3 essential components. The first one is criteria. What aspects are being evaluated? Example analysis. Are we testing the accuracy? Are we testing the presentation skills? Second component is level of performance. So typically there are 4 to 5 levels such as exemplary, proficient, developing, or beginning level. And then the third essential component of a rubric is descriptors. These are clear statements describing what each level looks like for every criteria. So what does these rubric do? These rubrics make assessment transparent, it makes it consistent, and it also keeps it aligned with the course outcomes. So when students know how they will be evaluated, they perform better because expectations are very clear and transparent. So let me also show you a quick example. So you can see for different criterion, we had statistical accuracy, reasoning and application, communication, ethical awareness. These are the 4 parameters. And you can see we have different level of performances. For exemplary, we would want correct interpretation. The students must be able to check assumptions thoroughly. For somebody who is proficient level, so mostly correct interpretation, minor errors can be allowed. Somebody who's at the developing stage, so some misinterpretation might be there. There will be lack of clarity. And somebody who's at the beginning stage, obviously incorrect or incomplete analysis will account to beginning stage. Similarly, for reasoning and application, you can see a beginning level a student will have no clear application of results, and somebody who's from the developing level, limited interpretation or vague linkages might be there. Somebody who's at the proficient level, on the contrary, would be able to make reasonable connections to the context. Yeah. And somebody who will be at exemplary level, they will be able to link results to decision making effectively. So likewise, you can have different criteria. Now, these criteria might differ based on what course, what paper, what stream you are from. Okay. But these, and similarly, you can also have clearly defined. For example, in the current example that I've shown on the screen, it has only 4 levels, but you want to be more minute with, kind of categorizing the students, then you can have as many levels as you want. Yeah. Again, we can have different number of criteria also. So see how each level is described. It's specific, it is observable, and it is fair. And this is a 4-level analytical rubric, and the kind used in most OBE frameworks. So each criteria links directly to a course outcome, and each level shows observable behaviors, not vague adjectives like good or poor. These are very vague. Okay, so that's the key point, that each level should show observable behaviors.
So rubrics, we can say, provide evidence of course outcome attainment. So if your course outcome says interpret regression results to make business decisions, then your rubric might measure statistical accuracy. It might measure reasoning. It might measure clarity. It might measure ethics. So rubrics are the element in the entire OBE framework which remove ambiguity. Now, the student would also know exactly what excellence looks like, and the teacher would know what evidence to look for. So these are not just for faculty, they are also learning tools. And when you share the rubrics with students before assessment, it sets clear expectations. So everyone would know what counts as excellent, what counts as good, and what is to be included in needs improvement, how needs improvement is to be interpreted. So as a result, what would happen? Students will be able to self-assess more accurately. Teachers will be able to grade more consistently. There will be less subjectivity and more objectivity in the grading. And the process would become objective and transparent. And as such, we have three different types of rubric. We have analytical rubric, we have holistic rubric, and we also have checklist rubric. Okay. So analytical, as the name suggests, it will break down tasks into multiple criteria, like the example that we saw. And it is best used for projects, for essays, for case analytics, for presentations also. And holistic rubric is what is the one which gives a single score based on overall impression. Okay, and it is best used for quick grading, presentations, creative tasks, and checklist rubric, as the name suggests, it is just a yes/no indicator for skills or steps on lab work, coding tasks, procedural steps. Are usually good for papers which require quantitative analysis or stepwise calculations. Yeah. So in outcome-based education, analytic rubric is most common because it produces detailed attainment data for each course outcome and criterion. And that's the data we later use to compute percentage of students achieving course outcome 2 or course outcome 3. So we will have defined definitive statistics for each course outcome. How many percentage of students were able to actually attain or achieve a particular course outcome. And again, there's an interesting part. This might seem a kind of a humongous exercise, but we have AI tools that can make this part ridiculously easy. Tools can make rubric designs effortlessly. Okay, again, you can use a prompt in ChatGPT or Gemini. For example, you can give a prompt like create a level 4 analytical rubric for the outcome, design a sustainable business model for a local enterprise. You can also define your criteria. For example, include 3 criteria: innovation, feasibility, and clarity with descriptors for each level. I'll in fact showcase that to you also. Let me share my screen again. I will share my Chrome screen. Okay, let's copy paste the prompt. Okay, let's see how we can use ChatGPT for creating a rubric design. Okay, and I'm assuming that all of us have used ChatGPT in some or the other form. Okay, so the thing with these tools, all the AI tools, is the basic premise is garbage in, garbage out. The more clarity you give it in your prompt, the prompt is the instruction that we give to these application, these software. The more clarity, the more closely aligned the output is going to be. Yeah. For example, let's just copy paste this. I want to create a 4-level analytical rubric for the outcome-based design, a sustainable business model. That's an assignment, okay? And I also want to specify the 3 criteria: innovation, feasibility, clarity, with descriptors for each level. And let's just completely press enter, okay? You can see within a second, you can see on the shared screen, within second, all the 3 criteria, their different levels: exemplary, proficient, developing, and beginning. All the levels have been clearly defined, and you will be able to grade the presentations, grade the model. Okay. So that's how you can use
again, see, ChatGPT is smart enough. It knows that why am I doing this exercise? Because I want to align my teaching and my assessment with OBE. So it is also asking me, would you like me to align this rubric with Bloom's level, create, evaluate, analyze, or OBE components like knowledge, skills, attitude? Okay, so I can again go. I'm not saying that this will give you a picture perfect and completely you can adapt it as it is, but it will give you the base work. Okay, it will do the heavy loading and then maybe you can refine it for yourself. Again, there is no substitute to the research acumen and the teaching experience that we have that cannot be substituted by any chat GPT or any other AI application for that matter. But it will give us the groundwork. It will give us the base work to, kind of refine and make it better. Dr. Ashutosh, may I interrupt you? Yes, ma'am. Can you, yeah, I just request you if it is feasible for you to be bilingual, Oh, because in that condition it will be more appropriate for the young faculty and the students joining from different sections. sure, Thank sure, you. sure. Sure, ma'am. Okay. My apologies. Yeah, I should have been conscious of that. So we were discussing about the, let me switch back to the PowerPoint PPT. So हम लोग बात कर रहे थे कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं नॉट जस्ट फॉर डिजाइनिंग रूब्रिक्स बाकी अपनी और भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ओबी से रिलेटेड कुछ भी जैसे हमें अगर अपनी कोर्स आउटकम्स बनानी है या हमें मॉड्यूलर प्लान का आई विल गिव यू एन एग्जांपल है ना चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हो चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो गवर्नमेंट फंडेड हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हो हम सभी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लेसन प्लान जरूर बनाना होता है जब भी सेमेस्टर शुरू होने से पहले जो भी हम पेपर कोर्स हम पढ़ाने वाले हैं उसका हमें एक मॉड्यूलर प्लान या एक लेसन प्लान जरूर बनाना होता है सो आई गिव यू अ क्विक एग्जांपल कैसे हम चैट जीपीटी को यूज करके वी कैन मेक दैट टास्क इजियर ओके आई होप यू ऑल कैन सी माय चैट जीपीटी आप सब लोग देख पा रहे हैं ओके तो यही बात जो मैंने आपको बोली कि मुझे एक मॉड्यूलर प्लान बनाना है और जहां पर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं क्योंकि हम लोगों को नैक का असेसमेंट कराना होता है वहां पर तो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्स्ट वाइल क्राइटेरियन वन एज वेल है ना वहां पर हमें हर 6 महीने में बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द IQAC क्राइटेरियन वन कन्वीनर सो हम लोग हर 6 महीने में सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले सभी टीचर से एक वीकली मॉड्यूलर प्लान मंगवाते हैं है ना एंड वी वुड ऑल्सो वांट कि वो जो प्लान है वो अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस यूनिफॉर्म रहे ताकि बच्चों को भी पता होगा कौन से वीक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं और टीचर्स को भी थोड़ा सा इट विल हेल्प अस देम अलाइन देयर टीचिंग्स राइट सो लेट्स सी हाउ चैट जीपीटी कैन हेल्प अस जैसे हमने रूब्रिक डिजाइन किया क्या हम मॉड्यूलर प्लान भी डिजाइन कर सकते हैं आई विल टेक एन एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर आपको अटैचमेंट का एक ऑप्शन होता है ठीक है let's go to a folder. Let's take an example of a paper that I'm teaching this semester. I hope आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग ठीक है यस सर यस तो मैंने सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर दिया है आप देखिए मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस एक पेपर है जो मैं इस सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो हम देखते हैं इसका मॉड्यूलर प्लान हर यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर भी यूनिट वाइज सिलेबस है सो मॉड्यूलर प्लान इज बेसिकली क्या होगा लेसन प्लान टर्मिनोलॉजी अलग अलग जगहों पर अलग होगी पर क्रक्स यही होता है कि हम वीक बाय वीक मंथ बाय मंथ हम डिवाइड कर देते हैं पूरे सिलेबस को ओके एंड लेट्स सी हाउ वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी ओके यही बात हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट में लिखते हैं आई एम जूमिंग इन माय स्क्रीन ताकि आप लोग देख भी पाओ और जैसा मैंने पहले भी बोला चैट जीपीटी के लिए या कोई भी एआई टूल के लिए बेसिक प्रमाइस यही है गार्बेज इन गार्बेज आउट जितना क्लैरिटी के साथ आप प्रॉम्प्ट लिखोगे और उसको बताओगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उतना ही क्लोजर टू योर एक्सपेक्टेशन आउटपुट आएगा ओके सो लेट्स से यहां पर लिखते हैं आई वांट टू क्रिएट वीकली मॉड्यूलर प्लान फॉर द सब्जेक्ट whose syllabus is attached अच्छा अब सिर्फ इतना बताएंगे तो अभी मैंने कितने सारे पॉइंट्स मिस आउट कर दिए राइट ना मैंने ये बताया कौन सा सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है ना हर जगह पर हर कॉलेज में उनका मिड सेमेस्टर ब्रेक भी होता है ना अदर रिक्वायरमेंट्स कैन बी देयर कैन बी फेस्ट ब्रेक
हाँ, या फिर मिड टर्म्स होने होंगे, उसके लिए एक हफ्ता उसमें कोई टीचिंग नहीं होगी। ठीक है, तो वो सब नहीं डिफाइन किया है, तो उतना ही वेग आंसर आएगा। तो चलो हम ये बातें भी डिफाइन कर देते हैं। फॉर द सेमेस्टर बिगिनिंग January 2026 ending April last week with March third week as mid-semester break. Now I also want to define, I want 3 columns. First for week number and month name. Second for syllabus to be covered. प्लीज आप मेरे टाइपो एरर को इग्नोर करना, चैट जीपीटी को समझ में आ जाएगा मेरे उससे क्या चाहिए। एंड थर्ड कॉलम फॉर, मान लीजिए हम ये भी चाहते हैं कि रिकमेंडेड रीडिंग्स, हाँ, थर्ड कॉलम फॉर रीडिंग्स। ठीक है, और कुछ भी अगर आप लोग कस्टमाइज करना चाहते हो, पर लेट्स से यहीं से इसी से इस प्रॉम्प्ट से क्या हमें जवाब मिलता है। आप देखो, जैसे मैंने बोला, हमें फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन का जैन टू अप्रैल 2026 के लिए मॉड्यूलर प्लान चाहिए था, और उसने हमें सारे वीक वाइज, यूनिट 1 का हम ये पोर्शन करेंगे, वीक 2 में ये कवर करेंगे, कौन सी बुक और कौन सा चैप्टर उस बुक का हम एज रीडिंग्स यूज करेंगे। और जैसा हमने बोला था, मार्च का जो सेकेंड थर्ड वीक है उसमें मिड सेमेस्टर ब्रेक होगा, तो चैट जीपीटी ने वहां पे कोई कंटेंट नहीं है। ओके, एंड वी कैन सिंपली कॉपी पेस्ट दिस, और हम कहीं पे भी जाके कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं हम, या हम एक्सेल में चाहते हैं, तो हम कहीं पर भी जाके इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यू हैव एवरीथिंग हियर। Now, I'm not saying this would be completely aligning जो आपके एक्सपेक्टेशन होंगे, पर एटलीस्ट हमारे पास बेस वर्क आ गया, हेवी लोडिंग। हाँ, अदरवाइज यूजुअली ये हमें 40 से 45 मिनट लगते थे प्रिपेयर करने में, बट नाउ आई विल जस्ट स्पेंड अनदर 5 minutes एंड माय जॉब विल बी डन। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एआई टूल्स। एक और एग्जांपल आई विल गिव यू चैट जीपीटी का ही, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद ओबीई। मान लीजिए, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, there's a problem of our students consistently hooked to their screens, hooked to their phones, हाँ? तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है सेम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना हमारे लिए यूजिंग जस्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अ टिपिकल लेक्चर मोड। दैट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस एज एजुकेटर्स। अब देर आर फ्यू चैलेंजेस। हाँ, एक चैलेंज तो है कि हमें भी अपने आप को एक्वेंट करना पड़ेगा उन सारे टूल्स से जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, जिनका हमें नहीं पता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग रिटर्न असाइनमेंट देते हैं, यूजुअली जो भी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन बेस्ड पेपर्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, knowing that most of the students are going to copy from each other, बट फिर भी हम वो असाइनमेंट देते हैं, बिकॉज हमें पता है जब बच्चा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेगा, देयर विल बी सम पोर्शन ऑफ दैट फॉर्मूला दैट विल बी काइंड ऑफ रिमेन इन द माइंड। हाँ, कुछ ना कुछ वो फॉर्मूला याद रहेगा उसको, 4 बार अगर 4 क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लिखा तो बच्चे को रीइंफोर्समेंट होगा, है ना, उस इंटेंशन से देते हैं। अब बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो चैट जीपीटी को बोलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, अनसॉल्व क्वेश्चन है बुक के, है ना, तो चैट जीपीटी से वो सॉल्व कराएंगे। ये भी हमने चलो एक्सेप्ट किया कि बच्चा ऐसा करेगा बिल्कुल, पर एटलीस्ट वो लिखेगा तो हैंड राइटिंग में। नाउ देर आर अदर एआई टूल्स जहां पर वो चैट जीपीटी का सॉल्यूशन ले जाकर कॉपी पेस्ट करेंगे, और वो एआई टूल उसको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर। So the entire rationale of our giving them the assignment is washed out. So the key point here is, हम लोगों को भी as fraternity, as teachers, as educators, हम लोगों को भी अपने आप को consistently update रखना पड़ेगा as to what tools are available, and also हमारे लिए एक चैलेंज ये भी हो गया, हाउ टू मेक क्लासेस एंड एवरीथिंग इंटरेस्टिंग फॉर देम। सो लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल। मान लीजिए, I will give an example, a live example. So I had to teach the concept of efficiency versus effectiveness. हाँ, अब जो लोग मैनेजमेंट के
डोमेन से बिलोंग करते हैं वो बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, या फिर ऑपरेशंस एरिया से, या फिर प्रोडक्शन वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस। अब मुझे ये टॉपिक नॉन कॉमर्स नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना था, who were first years undergraduate students जिन्होंने 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था. So I thought I did not want it to be a boring PPT and a lecture based session. So I thought why not use chat GPT and let us see what chat GPT suggests. Okay. So यही बात मैंने chat GPT को लिखी. I want to teach the concept of efficiency versus effectiveness to my, अगेन गार्बेज इन गार्बेज आउट, जितना क्लैरिटी के साथ हम प्रॉम्प्ट देंगे उतना कस्टमाइज्ड, उतना क्लोजली अलाइंड मेरा रिस्पॉन्स होगा. ओके, टू माय नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. जैसे मैंने यहाँ पे टू माय स्टूडेंट्स की बजाय हमने क्या लिखा, टू माय नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. कौन से स्टूडेंट्स? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ताकि जो भी एक्टिविटी सजेस्ट करे चैट जीपीटी वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो. ओके, थ्रू एन इन क्लास एक्टिविटी which is participative and a bit humorous for the students. Can you help me plan this lecture of 45 minutes? Okay, just simple 1 to 2 line prompt, and let's see within seconds what it will do. आप देखो उसने पूरा मुझे बताया क्या हम मेसी टास्क चैलेंज देंगे. वी विल आस्क 3 volunteers to fold as many paper airplanes in as possible in 1 minute, and we will not tell them about accuracy. Okay, then they have to fly the planes. ठीक है, और कैसे हम, क्या पर्पस होगा, क्या डीब्रीफ होगा, an entire 45-minute lecture is planned, and I actually pursued this. So basically ChatGPT ने बोला पेपर प्लेन चैलेंज कराओ, आप क्लास में 2 ग्रुप्स को डिवाइड कर दो, हर ग्रुप को अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना होगा और उनके पास कुछ लूज शीट्स होंगी जिनसे उनको पेपर के प्लेन्स बनाने हैं. ठीक है, और दोनों में 2-2 कंपटीशन, 2-2 लेवल के कंपटीशन होंगे. पहले लेवल में कंपटीशन होगा कि आप उनको एक टारगेट दोगे, वहां तक उनको वो प्लेन उड़ाकर पहुंचाना है, और दूसरा होगा कि जिस टीम ने ज्यादा प्लेन्स बनाए. एंड दैट इज हाउ आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नो वन यूज केस, देयर आर मल्टीपल यूज केसेस ना. ये सिंपल सा एक एग्जांपल जो मेरे सब्जेक्ट में मेरे को काम आया उसके लिए हमने यूज किया. ओके, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैड हेल्प मी प्लान एवरीथिंग. कितना मिनट मेरे को डीब्रीफ में लगाना है, कितना मिनट मुझे आइस ब्रेकर करना है, कोई फनी वीडियो दिखा सकते हैं. आजकल बच्चे बहुत इंस्टाग्राम और लिंक्डइन यूज करते हैं. कैन वी हैव डिस्कशन ऑन मीम्स इन क्लास. सैंडविच फैक्ट्री का एक एग्जांपल दिया. ओके, सो ऑल दिस हैज हेल्प मी एंड दिस वाज अ पार्टिसिपेटिव एक्टिविटी. अदरवाइज मैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या समझाता, जो प्लेन अपनी जगह से ज्यादा पहुंचा वो एफिशिएंट है, जिसने ज्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स बनाए वो टीम इफेक्टिव हो गई. Yeah, so that would have been really monotonous for the students. So that is how we can use these tools. Okay. Just a few, I mean, because the time period is quite short, just one use case that I wanted to discuss with you all. Okay. Moving on, coming back to our topic, that is linking rubrics to outcomes and evidence. So every rubric which we design should connect directly to our course outcomes. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूइंग विद द सेम स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल, हमारा पहला कोर्स आउटकम है अप्लाई स्टैटिस्टिकल टूल. तो रूब्रिक का क्राइटेरियन क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी. असेसमेंट टूल क्या होगा, एक असाइनमेंट होगा. हाँ, और अगर हम ब्लूम लेवल की बात करें तो वो जो 6 लेवल्स थे उसमें से कौन सा लेवल हुआ, ये अप्लाई लेवल हुआ. ऐसे ही अगर हम कम्युनिकेट्स रिजल्ट्स एथिकली की बात करें तो रूब्रिक क्राइटेरियन क्या होगा, प्रेजेंटेशन एंड एथिक्स पार्ट. असेसमेंट कैसे होगा, आपने वाइवा लिया, आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन रखा, और ब्लूम का कौन सा लेवल हुआ, ये इवैल्यूएट लेवल. ओके, सो when you mark students using this rubric, you're not just giving grades. हम एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से आउटकम्स अचीव हुए और कौन से आउटकम्स पे अभी काम करना बाकी है.
एंड लेटर अगर हम देख पाएंगे कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कोर्स आउटकम 1 पे ज्यादा स्कोर किया और लो किया स्कोर कोर्स आउटकम 3 पर, तो आपको पता होगा कि कहां पर कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है. ओके, सो यू विल बी एबल टू टेल कि ethical communication wasn't emphasized maybe in the classes enough. So that is your continuous quality improvement loop, जिसको हम CQI भी बोलते हैं. और ये सिंपल मैपिंग अलाइनमेंट इंश्योर कर रहा है. कैसे हम CU से रूब्रिक से एविडेंस पर आए हैं. सो व्हेन यू कैलकुलेट स्टूडेंट स्कोर्स ऑन ईच रूब्रिक क्राइटेरियन, आपको ऑटोमेटिकली डेटा मिल जाएगा आपके CO अटेनमेंट लेवल का फॉर ईच स्टूडेंट्स. एंड दिस इज व्हाट मेक्स OBE पावरफुल. Every mark has meaning. Okay, and this is where AI again has become a friendly assistant. We can upload our rubric scores into Excel sheet या कोई और भी लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे ग्रेड स्कोप हो गया, गूगल फॉर्म्स हो गया, और AI उसको हमें समराइज भी करके देगा और इनसाइट्स भी ड्रॉ करके देगा. ओके, सो नाउ यू विल हैव एविडेंस ऑफ ईच स्टूडेंट्स progress, not just guesswork. And we must always remember that OBE is not just paperwork, it is also a mindset. It is about knowing what difference your teaching made, and rubrics are how we find that out. Moving towards the last few slides. So if you think about it, OBE process एक loop है. आप प्लान कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो, और फिर आप एनालिसिस कर उस पर इंप्रूव कर रहे हो. We plan outcomes using Bloom's verbs. We measure them through rubrics and aligned assignments. और फिर हम improve करते हैं based on the evidence that we get. And this is the continuous journey of a reflective teacher. And obviously, as we have seen, that AI tools can make every step smoother. जैसे कि AI को हम बोल सकते हैं MCQ ऐसे बनाकर डिजाइन करके दे हमें जो ब्लूम के लेवल को काइंड ऑफ अलाइन करें, और या फिर समराइज करें ओपन एंडेड फीडबैक को थीम्स में थीमेटिक एनालिसिस से. और जिन लोगों को हम में से क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं आता, इनको सॉफ्टवेयर नहीं पता है, सो वी कैन यूज दीज टूल्स आल्सो. ओके, so I think that's a lot of ideas for one session. So let's take a breath and let's try to summarize what we learned. So what did we learn? We learned that OBE, outcome based education, is not a framework. ये एक mindset है. It shifts the focus from हम क्या पढ़ा रहे हैं, इस फोकस से हम कहाँ मूव करना चाह रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, what our students can do. So Bloom's taxonomy हमें verbs दे रहा है to describe learning, rubric हमें evidence दे रहे हैं उसको measure करने का, और AI हमें tools provide कर रहा है to make the process easier, faster as well as smarter. Okay, so before we close, I would request everyone to take 30 seconds. आप कोई भी जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सोचिए, और एक कोई भी मेजरेबल आउटकम, सिर्फ एक कोई भी एक्शन वर्ब यूज करके आप लिखिए. ओके, और मे बी राइट वन वे आप AI को एज अ टूल अपनी नेक्स्ट क्लास में कैसे यूज करेंगे. ओके, I would want some of you to volunteer and share. Otherwise, you can just type in the chat box. Okay, so I leave you with this thought. If you change the verb, you change the evidence. And that's the power of outcome-based education. So that would be all from my end. Thank you. Thank you so much, sir. Your subject-related address has given us all a new perspective on the topic. You enrich our knowledge with concepts like OBE pyramid, Bloom's taxonomy, AI-assisted rubric design, how we use AI tools. Thank you so much again, sir. Now, at the conclusion of today's webinar, the principal who is presiding over the program will present the concluding remarks. I invite our esteemed principal, Professor Kalpana Viren Singh. Madam, over to you. Thank you, Reena. From morning onwards, we are just listening to the experts in their own fields. And definitely this webinar was about the outcome-based teaching and learning process. We just, we learned many things from
Professor A.K. Bakshi. We learned many things from Professor Vimal Rar and then from Dr. Ashutosh Yadav. It was a nice journey which started today morning from 11 a.m. till this time. Before I say something, I would just like to say one thing to Dr. Ashutosh Yadav. Actually, you were talking about rubrics, and I am also, before resuming these duties as the principal of this college, I was very much interested with these quality-oriented works and these OB type of works. And when I was working as a team member with NAC and when we were designing the LOs and COs and mappings and all that, at that time, these rubrics, they become very important for us. And I myself struggle to learn a lot about that. How can I design rubrics for my chemistry class? Because I'm a student of chemistry, not a teacher, but a student of chemistry. So I would just request you, Dr. Yadav, that today you have given us an overview, but I do not think so that this overview will suffice the lack of knowledge which we have. So मैं आपसे ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आने वाले समय में मैंने यही बात